Auzubillahi minash-shaytanir rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello and warm welcome to all peaks of the global world. My name is Atif Salim Bhatt. I am from Faisalabad, Punjab, Pakistan. You all are watching my YouTube channel. Kindly subscribe my YouTube channel and press bell icon for latest upcoming videos. Are you with me? Today I will elaborate you about causes of corruption. Let's start topic of the day through step-by-step procedure. The definition of corruption is to utilize the abusive power which were delegated to the professionals. So they are taking revenge from general publics in shape of corruption, bribery, gratification and multitasking activities. In this way, the society is moving towards niche direction day by day. We are watching a little bit of color faces of the global world. We are missing the real classical stuff of the honesty, devotion, sincerity, loyalty, and so on. We are moving towards the causes of the corruption. Number one, covert and covert approach. Everybody wants to look into yourself as a lifestyle achiever as well as multi-talented person with some kind of special activities. So they are adapting inferior system of corruption, bravery and gratification. That's why the society is moving towards swindling direction as compared to upward direction. The people are facing heaps of ambiguities, hindrances and hurdles due to this stunt and dumb system. Number second point, carrying responsibilities. It is my unfortunate duty to inform all of you that we all are not taking any kind of proper responsibilities in effective and efficient manner. So that's why we all are facing hustle condition. We all are moving towards hustle and bustle direction instead of inclining direction. It is a main cause of corruption. We all are missing the risk and return of the reward of corruption and multitasking activities. Number third point, transparency. Transparency is more oftenly missing in each and every department of the global world. So we all are missing hale and hearty infrastructure. That's why the mates are feeling deep trouble instead of calm, cool, comfort and relaxed style. The people are working for their own lifestyle. They are not working for their country and million or trillion peoples of the global world. Number 4 point, system collapse. It is my unfortunate duty to inform all of you our system is collapsed due to the negligence as well as exploitation of some peers. So that's why we are not generating any kind of alive and kicking system with massive cognition of supremacy till now. That's why the tree of corruption as well as sea of corruption is more oftenly increased day by day in the global society. For instance, our top level management, our middle level management, as well as lower level management, all were collapsed due to the negligence. Everybody wants to achieve some kind of specific benefit. We want to achieve opulence and affluence instead of the nation. We all are praying trillion people of the global world. So that's why our system as well as structure is more often missing. Fifth and final point, implementation implication, practical ground reality. Everything is missing in our global society. We all are here to move without any kind of working. We all are working for personal benefit, compensation, incentives, reward system, and so on. We all are playing with the humanity. It is considered as massive axe and painful blow, especially with the humanity. We all are not taking any kind of serious measures as well as responsibilities. For instance, A is transferring his responsibility to B is transferring his responsibility to C is transferring to his responsibility D. We all are playing through hedging procedure instead of any kind of practical implementation with conformance of greatness. We will be done decent and sophisticated corruption free state of the global world very soon, but practical implementation is necessary. We all are missing practical implementation till now. We are moving through monkeys here and there without any kind of implementation, implication or other activities.
the people are facing deep trouble system, but your bastard system is not supporting the general public. They all are working for personal benefit as well as gain. Hope you will enjoy my lesson. Thanks to all of you. Love you all. जी जनाब, करप्शन कहते किसे हैं? करप्शन कहते हैं अपने इख्तियारात को जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से या हमें हमारे इदारे की तरफ से मिले हुए हैं, उसके नाजायज़ इस्तेमाल को करप्शन कहते हैं। हम एक काम करते हैं ना, तो काम की हम सैलरी लेते हैं, हम रिवॉर्डिंग लेते हैं। तो जिस चीज़ की हम रिवॉर्डिंग लेते हैं तो हम पाबंद हैं, जनरल पब्लिक के हम नुमाइंदे हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। उसके लिए अगर हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए या उसके जायज़ काम को परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म की कोई रकम का मुतालबा करेंगे तो उसे करप्शन कहते हैं। करप्शन को दुनिया में कहा क्या जाता है? करप्शन को एक किस्म की गाली कहा जाता है। करप्शन की वजह से ही दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है ना, तो वहाँ पे जड़ें खोखली होती हैं, अमल दरामद नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। सिस्टम पर हम लोगों ने अमल दरामद कराना है। अब एक पर्सन नहीं कराएगा, दूसरा नहीं कराएगा, तीसरा नहीं कराएगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कंट्री का लॉस होगा। करप्शन की वजूहात जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को साथ लेके चलते हैं कि करप्शन किस वजह से होती है। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक होती है कि जनाब लालच का पैदा हो जाना। करप्शन कहते किसी हैं? एक बंदा है, उसे एक इदारे से सैलरी मिल रही है, वो अपनी हलाल इनकम के साथ हराम इनकम ऐड करना चाहता है, यानी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो जायज़ ज़राए का सहारा नहीं लेता, वो हार्ड वर्किंग नहीं करता, वो पार्ट टाइम में जॉब नहीं करता, पार्ट टाइम में कोई बिज़नेस नहीं करता। वो क्या करता है? वो 2 नंबर काम स्टार्ट कर देता है, यानी एक बंदे के जायज़ काम है या मुख्तलिफ लोगों के जायज़ काम है, उनको परफॉर्म करने के लिए उनसे एक्स्ट्रा पैसों का मुतालबा करता है। उसे करप्शन कहते हैं। तो इसमें ये लालच का सबसे ज़्यादा अहम पहलू है। पॉइंट नंबर 1 क्या है इसमें? लालच। नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ ज़िम्मेदारियों को निभाने का जो रुझान है ना, इसका फुकदान पाया जाता है। इस भी वजह से करप्शन होती है, यानी एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा, दूसरा अपनी नहीं कर रहा। गर्ज़ ये कि कोई भी बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को बेहसन तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा, इस वजह से भी करप्शन इंक्रीज़ होती है। नंबर 3 पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। शफाफियत ना होना, यानी काम तो करना है, ऑफिस में हम जाते हैं, अगर हम उसे अच्छे तरीके से खुशनुबी से सर अंजाम देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर हम उसे खुश असलूबी से अंजाम नहीं देंगे तो वो ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इस चीज़ की हमारे माशरा के अंदर कमी है, बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की कमी है कि हम अपने कामों को खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। जी जनाब, 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिस्टम। असल में सिस्टम में तो क़वाइदो ज़वाबित और कवानीन जो है उनकी बहुत तफसीली वजाहत की गई है। सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने बनाया है, उसके ऊपर अमल दरामद करना, एक सिस्टम के ऊपर चलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सिस्टम को साथ लेके नहीं चल रहे। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा क्लैप्स क्या है कि ना हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, ना हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, ना हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है। एक बंदा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो दूसरे को दे देता है, दूसरे को मिलती है तो वो तीसरे को दे देता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि यार जो जनरल पब्लिक है ना, उसके काम डन नहीं होते, स्ट्रगल कर करके वो फाइल ही क्लोज हो जाती है और एंड ऑफ द डे इनको भी भूल जाता है कि यार हमने कोई काम करना था या हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी। तो ये सिस्टम का फेलियर है हमारे, ठीक है जी। इसको हमने गैर मसावी तरीके से हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं यहाँ पे कौन सा करप्शन का 0% रेट है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी करप्शन को रिड्यूस करने के लिए और उसे जड़ से उखाड़ने के लिए। हम लोग लेते ही नहीं है, बस हम लोग कहते हैं फ़लाने बंदे को हमने असाइन कर दी है। ये कौन सा कोई यूरोप का या अदर वर्ल्ड का कंट्री है जो करप्शन फ्री है, जहाँ पे 0% रेट है करप्शन का जो है, या है भी तो नॉमिनल्स है, ना होने के बराबर है। हायर साइड पे जा रहा है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। नंबर 5th पॉइंट की तरफ चलता हूँ। अमल दरामद नहीं है हमारे, बातें हैं सिर्फ, अमल दरामद की कमी है। एक बंदा हमें रिपोर्ट बना के भेजता है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, चाहे उसने झूठी बनाई हो, हमने उससे क्रॉस इवेल्यूएशन नहीं करनी, अमल दरामद ही नहीं करवाना। फाइलिन जो है वो जलीलो ख्वार होते रहते हैं यार।
کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی ہمارے کنٹری پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے، ہمارے کنٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت سے محفوظ رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔